Okay, let's get started. We'll be starting today with the collection framework. Basics of that we will cover. Uh, so we'll try to understand what the word framework is. What the word framework is. Framework होता क्या है actually? We'll try to understand. अभी हमने last time एक Lombok library use किया था, right? Are you aware of Lombok library? Lombok library are you aware of? Getter setter generate करने के लिए, setter generate करने के लिए. Are you aware of? मैंने आपको बताया था. ठीक, नो प्रॉब्लम. अभी what framework is? So framework is simply some predefined set of code. What is framework? Framework is not something a software we can directly run, double click and we can. It is not a executable software. It is not a executable tool. जैसे कैलकुलेटर वैसे कोई ऐसे framework मतलब it is not a tool or a software. It is not a program that you can directly run. It is not an end executable. It is something predefined set of code. It is a predefined set of code. It is a predefined set of code. It is a predefined set of code. And what is the reason we use framework? Why framework was developed? What is the reason? Framework क्यों create करते हैं हम मतलब बहुत सारे frameworks हैं. Now predefined set of code क्यों कोई लिख सकता है मतलब why we are writing predefined code? What is the reason people write? Why people are developing frameworks? Now frameworks can be written in different programming languages. Frameworks can be written in different programming languages. Now there are Java based frameworks. I will talk about Java based frameworks. मतलब ऐसे frameworks ऐसा कोड जो Java में लिखा है. Example, collection is also collection framework. It is a Java based framework. Hibernate, it is also Java based framework. Then we have Spring, it is also Java based framework. We have a Spring Boot also. This is also Java based framework. Spring, under that we have a lot of other frameworks such as Spring Core, Spring MVC, Spring JDBC, Spring Data JPA, और भी बहुत सारी है. Spring AOP, we have a lot of things. अब ये सारे प्रीडिफाइंड फ्रेमवर्क है. अभी इसका यूज क्या होता है? फ्रेमवर्क कोई भी क्यों बनाता है? Why people are developing the frameworks? Why people are writing the code in advance? Simple reason. अभी जो भी काम हम रिपीटेडली करते हैं, एग्जाम्पल, अभी मुझे कोई जेसन फाइल रीड राइट करना है या XML फाइल मुझे कुछ रीड राइट करना है. आई वांट टू रीड और राइट जेसन फाइल्स. So that is my repeat task. Everyone needs some logic to read and write JSON files. Everyone needs logic to read and write XML files. Everyone needs logic to work with the XML Excel files, PDF files, create करना, फिर read करना, ये logic सबको चाहिए होता है. Now this code can be written from the scratch. Reading or writing PDF files logic can be uh, written in scratch. Scratch से आप लिख सकते हो. You can do that in scratch. Scratch से भी कर सकते हो आप, लेकिन उससे होगा क्या? You will need lot of time. You will need lot of time and efforts also. फिर से बार बार हर एक डेवलपर वही कोड यूज कर रहा है. हर एक डेवलपर का मतलब रेगुलर बेसिस पे PDF फाइल के साथ काम करना है, जेसन फाइल रीड करना है, XML फाइल, या और भी बहुत सारे ऐसा लॉजिक हो सकता है. या किसी को मुझे ईमेल भेजना है, ईमेल भेजने के लिए पूरा स्क्रैच से कोड लिख सकते हो आप, या आप ऑलरेडी किसी ने एक बार मेल भेजने का लॉजिक लिखा एंड विच इज वेल टेस्टेड, वेरीफाइड, एवरीथिंग, इट इज रिटन कोड, तो आप वही कोड यूज कर सकते हो, राइट? Instead of you writing the code from the scratch, you can technically use the code which is developed by someone else. मतलब वो अच्छा कोड होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी कोड उठा लिया. The code must be verified and it must be from a authorized source. वही कोड यूज करोगे आप. So why people do that? Why people create frameworks? Frameworks मतलब हम भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर हम कुछ बार बार वही चीज कर रहे हैं, so we can also convert it into framework.
जैसे कोई लाइब्रेरी, अभी लॉम्बॉक लाइब्रेरी क्या करती है, अभी आप कोई क्लास होता है तो उस क्लास के लिए सेटर जनरेट करना, गेटर्स, कंस्ट्रक्टर्स, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स, टू स्ट्रिंग, ये बहुत कॉमन एक्टिविटी। मेरे पास 1000 क्लास है तो 1000 क्लास के लिए सेटर गेटर करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, ऑल ओवर कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग जनरेट करना पड़ेगा। ये काम आप ऑटोमेट कर सकते हो। ये काम ऑटोमेट करने के लिए लॉम्बॉक लाइब्रेरी यूज होता है। इट इज काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, इट इज काइंड ऑफ मिनी फ्रेमवर्क बोल सकते हो, which is used to help you. So why people develop frameworks? Because something is being done in repetitive manner. मतलब कुछ ऐसा काम हो सकता है वो रिपीटेडली आप कर रहे हो, मतलब स्क्रैच से बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसे। एग्जाम्पल, अभी आपने स्ट्रिंग क्लास पढ़ा, स्ट्रिंग क्लास क्यों डेवलप किया होगा? क्योंकि अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना है, आपके पास एरे ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? एरे ऑफ कैरेक्टर का यूज करके आपको क्या प्रॉब्लम होगी? एक एक कैरेक्टर को आपको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? तो इसी का सोल्यूशन, तो फ्रेमवर्क्स आर यूजुअली व्हाट आर सॉल्यूशंस? द फ्रेमवर्क्स आर solutions provided for a problem, for a group of problem बोल सकते हो, for a group of problem, ये हो सकता है मल्टीपल भी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन। फ्रेमवर्क्स आर नथिंग बट सॉल्यूशंस। क्या है वो? सॉल्यूशन। अगर ये कोई फ्रेमवर्क जावा में लिखा है तो आपको जावा बेस्ड फ्रेमवर्क में क्या मिलेगा? जावा कोड मिलेगा। जावा कोड मतलब आपको क्या मिलेगा? क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स, वेरिएबल, ये सब कुछ मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रेमवर्क्स की जरूरत क्या है? Why frameworks are developed? To give a solution for a particularly occurring problem. So this is nothing but a solution. So as a developer, we are going to be consumers of lot of frameworks. हम बहुत ज़्यादा frameworks यूज करने वाले। Why? क्योंकि हमारा काम बहुत आसान हो गया और बहुत जल्दी जल्दी हम कोड डेवलप कर सकते हैं। अब वो पूरा एकदम हर बार पूरा स्क्रैच से डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? अभी आप एक एग्जांपल ले सकते हो, लेट से आपको कुछ मैगी खाना है, मैगी मतलब कुछ नूडल्स खाना है, आपके पास ऑप्शन क्या है? पूरा स्क्रैच से बनाओ। यू हैव ऑप्शन ऑफ डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। उससे होगा क्या? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आटा लेके आओ, फिर उसको प्रोसेस करो, बहुत ज़्यादा टाइम है। रेडीमेड आपको क्या मिलता है? मैगी, पैकेट खोलो, आपका काम ईजी हो जाता है। तो व्हाट इज दैट? इट इज काइंड ऑफ आपका एफर्ट्स रिड्यूस करने के लिए है आपका इस, राइट? तो ऐसे ही फ्रेमवर्क्स है। फ्रेमवर्क्स आर नथिंग बट विच आर यूज टू रिड्यूस द एफर्ट्स, एंड लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स आर देयर विच आर वेरी मच अवेलेबल। उसके कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी। So every framework comes with some pros and some cons. So we have to, based on your requirement, if it is solving a lot of problems, you can use that. So there are a lot of frameworks available in the market. Everyone is competing with each other. There are a lot of free frameworks are there, open source frameworks are there. There are a lot of paid frameworks are also there. There are a lot of paid frameworks are also there. So there are free also and paid also, but usually you will find a lot of open source. Open source means these are openly available. Such frameworks we can use. Clear है framework word क्या होता है? Why do we do that? So if we are using frameworks, can be uh, free as well as paid. There are a lot of free frameworks are also there and paid are also there. ठीक? Now if we are using frameworks, what happens? So we have to we do not need to write lot of code. तो सेम काम आप बहुत जल्दी कर सकते हो using frameworks we can speed up the application development. इससे होगा क्या कि आपका काम बहुत इजी होगा और फास्ट हो जाए, बहुत सारा एफर्ट्स आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द यूज ऑफ फ्रेमवर्क। तो अभी हर एक फ्रेमवर्क आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट प्रॉब्लम इट इज सॉल्व, व्हाट इज द सॉल्यूशन यू आर गेटिंग, व्हाट इज द सॉल्यूशन यू आर एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम दैट। व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट फ्रेमवर्क इज ट्राइंग टू सॉल्व, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, हर एक फ्रेमवर्क कुछ ना कुछ सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स।
कैन टेल what are frameworks, आप पूछ सकते हो. You will see that you will get the simple answer that these are programs predefined, and you will get partially ready-made code, मतलब semi developed application बोल सकते हो. What is that? Semi developed application. How? Semi developed application. So frameworks are nothing but semi developed applications. क्या होता है semi developed? Frameworks are nothing but semi developed application. उसको और थोड़ा कोड डाल दो और आपका पूरा एप्लीकेशन बन जाएगा. So these are not fully complete, but आपको कुछ ना कुछ मिलना पड़ेगा. अभी जावा में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मैंने अभी आपको बोला. स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, स्ट्रट्स है, बहुत सारी है. तो अबाउट दैट, तो इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेके जाते हैं. तो कोई भी फ्रेमवर्क को आपको दो क्वेश्चन पूछना. व्हाट इज द प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग, एंड इज इट बेटर. सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछना कि व्हाट प्रॉब्लम इट इज ट्राइंग टू सॉल्व. हम स्टार्ट करते हैं इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कलेक्शन फ्रेमवर्क. व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क? इट इज ए जावा बेस्ड फ्रेमवर्क. क्या है ये? जावा बेस्ड फ्रेमवर्क. इट इज जावा बेस्ड फ्रेमवर्क which contains predefined set of classes and interface. और उसके अंदर क्लासेस, इंटरफेसेस होगी, मेथड्स होगी, एंड मेथड्स, बहुत सारा कुछ होगा. ठीक. नाउ अभी ये आपको पता है कि फ्रेमवर्क विच विल हैव प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कोड. नाउ दिस फ्रेमवर्क इट इज पार्ट ऑफ जेडीके. तो कलेक्शन फ्रेमवर्क कम्स विथ जेडीके, स्टैंडर्ड जेडीके. आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती. दैट इज पार्ट ऑफ जेडीके, स्टैंडर्ड जेडीके. आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे स्प्रिंग होता है तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, हाइबरनेट होगा तो अलग से लेना पड़ेगा. दिस इज समथिंग यू डू नॉट नीड दैट. आपको ये स्टैंडर्ड जेडीके पे मिल जाता है. ओके. नाउ यू माइट आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन कलेक्शन फ्रेमवर्क इज इंट्रोड्यूस, और व्हाट इज द यूज ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क. व्हाट बेनिफिट इट इज गिविंग अस, व्हाट इज द प्रॉब्लम इट इज ट्राइंग टू सॉल्व. What problem it is trying to solve. So we have to understand that. So what do you think, what collection framework might be helping us? किस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं? Yes, Andan. I will tell you the problem and then we'll try to understand कि collection कैसे आपको solution provide कर रहा है. So I will give you simple questions. उससे पहले I will talk about the problem. What is the problem? A problem is उसको समझने से पहले लेट्स से मुझे कुछ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है. आई वांट टू स्टोर 10,000 वैल्यूज, 10,000 इंटीजर वैल्यूज. तो व्हाट आई कैन डू, we can create that many number of variables. If you want to store multiple values, what is the option? Create that number of variables. Again, that is very time taking process and it is not that efficient process of storing multiple values. That is the first thing. Second, we can go with the array. We can hold multiple values with using array. So what is the what is the problem with the array? So if you want to store, पहला solution क्या है आपके पास? Is to store multiple values. To store multiple values, क्या कर सकते हो? We can create that many number of variables. Is time taking process, time taking and not efficient. Is time taking and not efficient. दूसरा ऑप्शन क्या है? We can hold multiple values using n, but there are a couple of issues with the array also.
जैसे मुझे 10,000 वैल्यू स्टोर करनी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कितनी सारी वैल्यू स्टोर करनी है पहले से पता ना हो। आई माइट नॉट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज आई वांट टू स्टोर, आई डू नॉट नो दैट। फिर कैसे करोगे आप? तो यूजिंग एरे व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट एरे एज्यूमिंग सम नंबर ऑफ थिंग्स। क्या करोगे आप? यू विल एज्यूम कि 100 या 200 या 300, इतने साइज का एरे क्रिएट करोगे, यू क्रिएट द एरे विद दैट मेनी साइज। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? आइदर यू विल हैव अ शॉर्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस और वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। व्हाट इज ड्रॉबैक्स ऑफ एरे? कैन यू टेल मी द ड्रॉबैक्स ऑफ एरे? Array, using array, we can store only fixed number of elements, the fixed number of values और elements। और दूसरा ये है कि आप सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हो। क्या करते हो? इंटीजर तो इंटीजर, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग, लेकिन वहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, हेटेरोजेनियस भी, लेकिन सेम टाइप का ही हो गया, राइट? मल्टीपल वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या है? वी कैन स्टोर होमोजेनियस डेटा, कैन स्टोर होमोजेनियस, वी कैन स्टोर होमोजेनियस डेटा ओनली। ये हो गया। और क्या है प्रॉब्लम? Since array is fixed in size, either either there will be shortage or wastage of space। What will happen? वहाँ पर एक तो शॉर्टेज होगा और वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस होगा। आपने बोला मुझे 100 वैल्यू स्टोर करना है, लेकिन आपने स्टोर करी एक वैल्यू, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। आपको करने थे 200, लेकिन आपके पास एरे है 100, दैट इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी, राइट? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पर। जब आप एरे में कुछ वैल्यू स्टोर करते हो और मुझे उसमें से कुछ डेटा डिलीट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो डिलीट करना तो ठीक है। डिलीट करने के लिए क्या होता है? लेट्स से मुझे वैल्यू है मेरे 1 2 3 4 5 6, अब उसमें से 3 मुझे डिलीट करना है। तो 3 डिलीट करने के बाद उसके राइट में जो भी सारे एलिमेंट्स है उसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट में। तो वी हैव टू द शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स टू द लेफ्ट। अब मुझे इंसर्ट करना है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ रहे हैं, और मुझे 3 के बाद इंसर्ट करना है। So what I have to do? I have to shift the elements from 4, 5, 6 till to the right। अगर मेरे पास 1 बिलियन का एरे है, 1 बिलियन का एरे है, उसमें से मुझे कुछ एलिमेंट डिलीट कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स वाला, क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स हैज टू बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट। अगर एक एलिमेंट इंसर्ट किया तो ऑल द एलिमेंट्स हैज टू बी शिफ्टेड टू द राइट। देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, देयर विल बी लॉट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग, एंड इट इज lot of overhead is there। So using array we cannot perform, मतलब परफॉर्म कर सकते हो, बट इट इज array is worst choice। इसके लिए worst choice if you are performing manipulation, बोल सकते हो, insertion, deletion elements, क्योंकि as there will be lot of shifting of elements, shifting of elements, shifting of elements either to the left or तब लेफ्ट एंड राइट आपका शिफ्टिंग होगा। इंसर्ट किया तो राइट में, डिलीट किया तो लेफ्ट में, ये हो गया। नाउ लेट्स से यू हैव अ एरे एंड इन दैट एरे यू हैव टू सर्च अ गिवन एलिमेंट। लेट्स से मेरे पास 10,000 वैल्यूज है, उसमें से मुझे क्या करना है? कुछ एलिमेंट सर्च करना है, या मुझे एलिमेंट वो सारा एरे रिवर्स करना है, या उस एरे के जो कंटेंट है उसको मुझे क्या करना है? सॉर्ट करना है, या मुझे क्या करना है? उसको डिवाइड करना है, उसमें मुझे एलिमेंट सर्च करना है। I have two arrays, I have two data sets, उसको मुझे एक साथ लिखना है। I want to divide the array into two parts। मुझे सर्च करना है, सॉर्ट करना है, या इंसर्ट करना है, डिलीट करना है,
इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, इन सारी ऑपरेशन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए लॉजिक कौन लिखेगा? डेवलपर. So developer is supposed to write the logic to search element in the given array, insert element in the given array, delete an element from the given array, find how many elements are there, sort करना, reverse करना, ये सारी चीज़ों के लिए who is responsible? Developer. So in short, there is no method support. There is no method support for the developer. सारा कोड कौन लिखने वाला है? Developer. So there is no method support. There is no method support such as searching, sorting, insert, delete, insertion, deletion, बहुत सारी है और भी है. There are lot many. तो इसके लिए developer is supposed to write for all the requirements, or all the requirements developer is supposed to write the logic. Developer is supposed to write the code. For all the requirements, developer is supposed to write the code. और भी बहुत लंबी लिस्ट है. There are a lot of other drawbacks also. There are a lot of other drawbacks also. तभी आपका क्या मतलब, आपको क्या करना था? आपको स्टोर करना था मल्टीपल वैल्यूज. इसके लिए वेरिएबल इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. एरे इज आल्सो नॉट द बेस्ट ऑप्शन. एरे इज आल्सो नॉट द बेस्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि डेटा स्टोर करना इट इज डिफिकल्ट, डेटा एक्सेस करना डिफिकल्ट, इंसर्ट करना डिफिकल्ट, डिलीट करना डिफिकल्ट, सॉर्ट करना डिफिकल्ट. ये सबके लिए डेवलपर इज सपोज टू राइट द लॉजिक. उसके ऊपर फिर उसको ये भी चिंता कि डेटा कम पड़े या स्पेस कम पड़ सकता है या ज़्यादा हो सकता है. दिल बी आइदर शॉर्टेज और वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस. ये सारी चीज़ें देख के फिर जावा ने सोचा कि कुछ तो किया जाए. अभी ये हर एक डेवलपर का रोज का काम है टू ऐड सम डेटा, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. मल्टीपल वैल्यूज क्यों स्टोर करना पड़ता है? व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? दैट इज अ रिक्वायरमेंट. देयर इज अ requirement in the programming. We need to store multiple values, perform some operations on that. That is requirement. So for that thing, Java people decided let's provide some solution. So what solution is? Collection is the solution. So what is collection framework? It is a Java based framework and it contains a lot of predefined classes, interface, methods, and it comes with standard JDK. और ये क्या solution provide करता है? तो यूजिंग कलेक्शन क्या कर सकते हैं हम? यूजिंग कलेक्शन वी कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. वी कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज विच कैन बी ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप एज ए सिंगल यूनिट. तब एक कंटेनर में, इट इज काइंड ऑफ अ कंटेनर. व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन इज काइंड ऑफ अ कंटेनर which is helping you to add multiple values. Now multiple values can be of same type, they can be of different type. So this is the collection framework. Now what are the advantages of collection? मतलब क्या क्या benefits दिया collection? What are the advantages? मतलब कुछ तो आपको फायदा होना चाहिए, राइट? पहला तो we can hold growable number of data. Growable number of data. There is no restriction. We can hold a growable number of data. So there is no shortage of. अब जितना चाहिए उतना डेटा आप ऐड कर सकते हैं. वट एवर द नंबर ऑफ डेटा यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड दैट. देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस. यू कैन होल्ड नंबर ऑफ डेटा. और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, वी कैन होल्ड होमोजीनियस एज वेल एज heterogeneous. कैन होल्ड होमोजीनियस एज वेल एज heterogeneous. ये हो गया आपका पहला. तो साइज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. You do not have any shortage. You can hold any number of data.
जैसे कलेक्शन, आपको एरे में आपको पहले से पता होना पड़ता है कि व्हाट इज दी साइज, वी डू नॉट नीड टू नो वरी अबाउट हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू स्टोर, you can store any number of values, you can store any number of values, any number of elements you can store, and plus you can hold homogeneous as well as heterogeneous, मतलब सेम टाइप का डेटा भी एज वेल एज डिफरेंट टाइप का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर दैट होमोजेनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस डेटा। ठीक, नाउ अभी ये तो हो गया कि पहला आपका प्रॉब्लम था कि आपको बहुत सारी वैल्यू स्टोर करना है, तो आपको देयर विल बी आइदर शॉर्टेज, विल बी शॉर्टेज। अभी शॉर्टेज को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी डू नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। अभी आपको पास अन इनफिनिट मेमोरी बोल सकते हो आप, यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ एलिमेंट। देन व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, आप होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस डेटा भी ऐड कर सकते। अभी जब आप मल्टीपल डेटा स्टोर करते हो एक साथ, तो उसके ऊपर आप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। क्या ऑपरेशन हो सकता है? उस डेटा में कुछ सर्च करना, उस डेटा को सॉर्ट करना, उस डेटा में से कुछ रीड करना, कुछ डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, और भी बहुत सारे ऑपरेशन। ये सब सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो कलेक्शन गिव्स यू मेथड सपोर्ट फॉर दैट। तो कलेक्शन प्रोवाइड्स lot of methods which can be used to perform operations on the given group of values, क्या क्या ऑप्शंस? ऐड अ सिंगल एलिमेंट, उस अभी आपके पास क्या होगा, कंटेनर होगा। व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन का यूज मतलब ये दिस काइंड ऑफ अ कंटेनर, एरे इज आल्सो कंटेनर, तो कलेक्शन इज आल्सो कंटेनर। क्या क्या कर सकते हो आप? ऐड वैल्यूज, डिलीट वैल्यूज, सिंगल वैल्यू हो सकती है, उसके बाद अपडेट वैल्यूज हो सकता है, सॉर्ट हो सकता है, सर्च हो सकता है, और भी एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो मतलब डेटा स्टोर करना भी काम आसान हो गया, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना भी आसान हो गया, राइट? So these are these two advantages of collection frameworks. I will tell you two more things. Collection framework provides lot of predefined data structures and algorithm. नाम सुन के लोगों को डर लगता है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड algorithms. So collection framework provides lot of predefined data structures and algorithms. अभी कलेक्शन जब भी वर्ड सामने आता है, आपको बस समझना है कि वी आर थिंकिंग ऑफ काइंड ऑफ अ कंटेनर, वी आर थिंकिंग काइंड ऑफ अ कंटेनर। अभी डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्गोरिदम कहता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड थ्रू classes and interfaces. Algorithms are provided through methods, इसको समझते हैं क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। बहुत लेमन टर्म में मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज एल्गोरिथम, बहुत सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ कंटेनर। What is data structure? Structure is nothing but kind of a mechanism or kind of a container using which we can store the data. Data structure मतलब जैसे आपके सामने data structure आता है, you can think of you have a container. What is data structure? A container. कंटेनर का काम क्या होता है? कुछ होल्ड करना। कंटेनर का काम क्या होता है? होल्ड करना। तो डेटा स्ट्रक्चर जब भी आपके पास होता है, तो सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? इफ आई वांट टू टेल यू, डेटा स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ अ कंटेनर, इट इज काइंड ऑफ अ कंटेनर। तो पहले कंटेनर होना जरूरी है, यू नीड टू हैव द कंटेनर। क्या होना जरूरी है आपके पास? कंटेनर। तो कंटेनर इज नथिंग बट योर डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है आपका कंटेनर? डेटा स्ट्रक्चर।
So data structure is nothing but a container. Data structure is nothing but a structure or a container using which we can store the data. Can store the data. Not only data, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर. अभी के लिए बस डेटा स्ट्रक्चर जब जैसे ही वर्ड सामने आए तो आपको दिखाई देना चाहिए कंटेनर. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. क्या क्या है? एरे है, लिंक लिस्ट है. लिंक लिस्ट में आपके पास मल्टीपल है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, ग्राफ आपके पास स्टैक है, क्यू है, आपके पास ग्राफ है, ट्री है. दीज आर नथिंग बट कंटेनर्स और स्ट्रक्चर्स. अब ये स्ट्रक्चर मतलब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स है. आप लेट्स से आई विल टेल यू सिंपल एग्जांपल. अभी हम घर में पानी स्टोर करते हैं अलग अलग कंटेनर्स में. ग्लास भी है, बॉटल्स है, बकेट्स है, टंकी है. तो हम एक ही कंटेनर क्यों नहीं यूज करते? वाई डोंट वी यूज ओनली वन कंटेनर? वी हैव डिफरेंट नीड्स एंड फॉर डिफरेंट नीड्स वी हैव डिफरेंट कंटेनर्स, राइट. अगर हमें बहुत छोटा डेटा स्टोर करना है तो हम एक छोटा सा कुछ यूज करेंगे. तभी आप बोलोगे कि इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों है. तो दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट लेंथ बोल सकते हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. व्हाट आर दीज आर एरे अलग है, लिंक लिस्ट अलग है, स्टैक, क्यू, ग्राफ. दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और कंटेनर्स. और इसकी अलग अलग सबकी स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग पैटर्न है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज है. सिंपल एग्जांपल. अभी मुझे बताओ, लेट्स से आपके ग्लास में पानी भरना है. व्हाट ऑपरेशन वी परफॉर्म? पानी भरना है मतलब उसमें वी आर ट्राइंग टू ऐड सम कंटेंट. तो वो कंटेंट कैसे ऐड करोगे? पाइप लगाओगे आप बड़ा वाला एकदम? नहीं, राइट. अब क्या करोगे? टैप टैप वाटर यूज करोगे. अब टंकी में, बड़ा वाला टंकी, उसमें पानी ऐड करना है. अब वो टैप लगाओगे, क्या करोगे आप बड़ा वाला कोई तो उसको सोर्स होगा. पानी निकालना है, ग्लास में से पानी निकालने के लिए आप क्या मग यूज करोगे? क्या करोगे आप? बकेट में से पानी निकालने मग यूज करते हो आप. वैसे ग्लास में से पानी निकालने के लिए मग यूज करोगे क्या? सबका अपना अपना तरीका है. सो हाउ टू ऐड डेटा, हाउ टू रिमूव डेटा, हाउ टू सर्च डेटा, दीज आर डिफरेंट थिंग्स. मतलब सब ऑपरेशन का नाम सेम ही है, पानी ऐड करना सब में, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है. ग्लास में पानी ऐड करना अलग है, बॉटल में अलग है, बकेट में अलग तरीका होता है, बड़ी वाले टंकी में अलग होता है. पानी उसमें से डेटा निकालने का ऑपरेशन भी सबका नाम सेम है, लेकिन तरीका अलग है सबका. बड़ी वाली टंकी से कैसे पानी निकालोगे? ग्लास से निकालोगे, एक एक ग्लास ऐसे, या ग्लास में से ऐसे एकदम बकेट भर के निकालोगे, बकेट में ग्लास ऐसे, राइट. सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स. तो डेटा स्ट्रक्चर पे क्या कर सकते हो आप? डेटा स्ट्रक्चर्स वी परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन. कंटेनर पे क्या कर सकते हो? क्या ऑपरेशन कर सकते हो? आप डेटा ऐड कर सकते हो, डेटा रिमूव कर सकते हो, डेटा सर्च कर सकते हो. आप में कुछ पानी है नहीं, आप चेक कर सकते हो कितना कितना डेटा है वहां पर. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटा वी हैव, व्हाट इज द साइज. ये खाली है, एम्प्टी है, चेक कर सकते हो ये एम्प्टी है या नहीं. आप इसमें से एक एक डेटा रीड कर सकते हो, एक एक डेटा आप टेकआउट कर सकते, यू कैन जस्ट रीड दैट. और भी बहुत सारी ऑपरेशन. तो डेटा स्ट्रक्चर हैज some structure, it has some particular pattern, and it has defined some operations also. What all operations we can perform that data structure, it is also. अभी मैंने आपको कंटेनर बताया. So what is that data structure? So how do we add data, how do we remove data, how do we search data, how do we uh, sort the data? What are these? These are nothing but algorithms. What are algorithms? Algorithms are nothing but steps to perform operation. क्या ऑपरेशन है? पानी निकालना. हाउ डू वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम द गिवन कंटेनर? So taking out the water is nothing but removing the content from the given container. वो आपका algorithm. So algorithm is nothing but a set of steps or kind of methods. These are nothing but operations. These are nothing but operations. These are nothing but operations that we perform on the given. So what is data structure? Data structure is nothing but a structure or a container which is used now, which is used to store some data, and we can perform several operations on that using some algorithm. So algorithms are nothing but operations performed on the given. क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है? एक सिंगल वैल्यू ऐड करना, मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना, सिंगल वैल्यू रिमूव करना, सिंगल मल्टीपल वैल्यूज रिमूव करना,
मल्टीपल वैल्यू एक साथ ऐड करना, सर्च करना कोई एलिमेंट, सॉर्ट करना, उसका साइज चेक करना, सारी वैल्यूज है कंटेनर में। उसके बाद आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, रिवर्स, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो दीज ऑपरेशंस आर नथिंग कॉल्ड एज algorithms. हाउ डू वी प्रोवाइड algorithms? टू मेथड्स। अभी आप मुझे बताओ डेटा कब कैसे स्टोर कर पाओगे? डेटा स्टोर करने से पहले आपको क्या चाहिए? आपके पास डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए? डेटा स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए पहले। उसके बाद ही उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद ही आप एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। एल्गोरिथम मतलब कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर। ऑपरेशन कब परफॉर्म कर पाओगे आप? व्हेन वी हैव द कंटेनर। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपके पास? कंटेनर और स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर्स आपको प्री डिफाइंड दिया उन्होंने। तो स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग क्लासेस। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर चाहिए, हाउ डू वी स्टोर डेटा इन जावा? हाउ डू वी स्टोर जावा? हाउ डू वी स्टोर data, or how do we store some data in the memory? Objects are used to store some data. Objects के अंदर ही डेटा रहता है। तो अभी उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्लासेस दिए, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया वो भी उन्होंने बताया। तो स्ट्रक्चर आपको, मतलब प्रोग्राम चालू हो गया, आपको डेटा को स्टोर करना है, तो क्या करना है आपको? उन्होंने जो क्लास दिया उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डेटा। जैसे अरे लिस्ट क्लास दिया, लिंक लिस्ट क्लास दिया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, एंड वी गेट अ कंटेनर, वी गेट अ स्ट्रक्चर। और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन हो सकता है? अभी खाली कंटेनर है, अभी उसके ऊपर क्या ऑपरेशन कर सकते हो? एलिमेंट्स ऐड करना उसके अंदर, एलिमेंट्स रिमूव करना, सर्च करना, रिट्रीव करना, उसका साइज चेक करना, हाउ मेनी एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये सारी ऑपरेशन कब कर पाओगे आप? जब आपके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर, मतलब कंटेनर लेना पड़ेगा आपको। कंटेनर कैसे मिलेगा आपको? कंटेनर कैसे मिलेगा आपको? तो वी हैव टू जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विच इज प्रोवाइडेड बाय देम। बहुत सारी क्लासेस दी है, तो उस क्लास का आप क्या करो? ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एंड वी गेट अ कंटेनर, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है? बस एलिमेंट्स ऐड करना है, रिमूव करना है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। तो टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट, क्रिएट द कंटेनर। डेटा स्ट्रक्चर आपको क्रैश क्रिएट करना है क्या? नहीं, उन्होंने क्या दिया, बना के दिया, बस उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। स्ट्रक्चर उन्होंने बना के रेडी सब कुछ कर दिया, आपको बस क्या करना है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, यू गेट अ रेडीमेड कंटेनर। रेडीमेड कंटेनर, और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है उसका भी उन्होंने ऑलरेडी लॉजिक लिख के दिया, आपको बस क्या करना है? उसकी मेथड्स कॉल। मुझे कुछ डेटा ऐड करना है तो बस डेटा दे दो उस ऐड मेथड को, आपका काम हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर इज आल्सो देयर एंड एल्गोरिथम्स आर आल्सो देयर। आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर यूज करना है, बस स्ट्रक्चर कैसे यूज करोगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। एल्गोरिथम्स कैसे यूज करोगे? मेथड्स कॉल। पूरा कलेक्शन हम ही पढ़ने वाले। what are the different classes, what are the different data structures are there, what are the different algorithms are there? Algorithms are nothing but method. Simple. समझ में आ रहा है? What is data structure and what is algorithm? Okay. It is a structure or a container using which you can store the data. On a given structure or a container can perform different operations, algorithms. क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो आप? क्या क्या एल्गोरिथम्स प्रोवाइड कर सकते हो आप यूजिंग? क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो? ऐड डेटा, remove data, search data, sort data, size of the data, find the size of the data. बहुत सारे operations आपके पास। This is some. And what are the different types of structures? There are different types of data structure. There are different types of data structures. आप घर में बहुत सारे कंटेनर्स, आपके घर में ग्लास है, बॉटल है, आपके पास कंटेनर्स है, अलग अलग तरीके से बकेट्स हैं। अलग अलग कंटेनर्स क्यों होते हैं? Why do we have different types of containers? For different requirements, for different needs.
हमारी जैसे नीड है वैसे हम कंटेनर यूज करते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी आपके पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स है, सच एज एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, के बाद ट्री, ग्राफ, और भी बहुत सारे हैं। इंग्लिश में आपके पास बहुत सारे हैं। So there are different types of structures. There are different types of data structures available. अभी आप इन सबको देख के ऐसे समझ सकते हो कि these are different containers with different sizes, different pattern, मतलब किसी का अलग अलग तरीका है और अलग अलग तरीके के algorithms होंगे, इसके ऊपर जो operations होंगे सबके अलग होंगे। डेटा ऐड करना एरे में अलग होगा, लिंक लिस्ट में अलग होगा, स्टैक में डेटा ऐड करना अलग होगा, क्यू में डेटा ऐड करना अलग होगा, ट्री में डेटा ऐड करना डिफरेंट होगा, ग्राफ में डेटा ऐड करना अलग होगा। तो ऑपरेशन की एक लिस्ट है, ऑपरेशन की एक लिस्ट है, वो सबकी सेम रहेगी, नाम तो सबका सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेशन होगा सबका अलग अलग होगा। जैसे मेरे पास 10 कंटेनर्स है, वाटर बॉटल है, ग्लास है, सब में डेटा मुझे ऐड करना है, सब में पानी भरना है मुझे, सबका तरीका अलग अलग होने वाला है। उसमें से डेटा रिमूव करना है या कंटेंट आउट करना है तो सबका नाम तो सेम होगा, रिमूव द कंटेंट, लेकिन उसके अंदर का जो लॉजिक होगा अलग होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट, लॉजिक डिफरेंट होगा, राइट? नाम तो सेम है लॉजिक का, बट उसके अंदर जो हम परफॉर्म कर रहे हो दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी डिफरेंट थिंग। ठीक, नाउ लेट्स सी दिस। नाउ all these operations are just listed down। ये कौन कौन से, कोई भी कंटेनर हो, कोई भी कंटेनर हो, तो सब में ऑपरेशंस की एक लिस्ट सपोर्टेड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कोई भी कंटेनर में, उसमें डेटा ऐड करते आना चाहिए, उसमें सिंगल डेटा ऐड करता आना चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करते आना चाहिए, या एक सिंगल वैल्यू रिमूव करते आनी चाहिए, या मल्टीपल वैल्यूज रिमूव करते सर्च करते आना चाहिए, एक लिस्ट। तो दीज लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस मस्ट बी available on all the data structures, must be available on the all the data structures, must be available on the all data structures। एक लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस, these operations must be available on all of the data। तो वो लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस कहाँ पर डिफाइंड है, विल टॉक अबाउट दैट। क्लियर है यहाँ तक? तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको बहुत सारे प्रीडिफाइंड क्लासेस, इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। नाउ see here carefully, collection framework provides lot of predefined classes and interfaces, और उन क्लासेस के अंदर, उन इंटरफेस के अंदर क्या मिलेगा आपको, मेथड्स। collection framework provides lot of predefined classes, interfaces, which are present, they are present inside the java dot package। कहाँ पर है ये सारे, कहाँ पर है, util पैकेज में, java dot util पैकेज। आओ, अभी आपको क्या सीखना है, कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखना है, मतलब क्या सीखना है आपको, कौन कौन से क्लासेस है, कौन कौन सी मेथड्स, एंड हाउ कैन वी यूज दैट क्लासेस, हाउ कैन वी यूज, ये सीखना है। तो पहले तो अभी जो मैं आपको हायरार्की देने वाला हूँ, make sure that next 2-3 days you are actually going through this hierarchy at least 10 times। खुद ड्रॉ करके देखो every day, next 4-5 days or next for a week at least, try to draw this hierarchy every day। क्या करना है आपको, ये पूरी हायरार्की पूरे एक हफ्ते तक हर दिन 10 एक बार खुद से बिना देखे नोट कर लो, हर दिन बिना देखे उसको गो थ्रू कर लेना। रीजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एंट्रीज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसी के ऊपर आएंगे और बहुत सारे क्लासेस आप यूज, तो दिस इज बोथ इंटरव्यू मटेरियल एज वेल एज
गोइंग टू बी हेल्पफुल टू राइट कोड आल्सो, आपको कोड लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और इंटरव्यूज में भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन। तो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू। आपको उसके पहले आपको मैं 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? Acquiring the properties and methods from one class to another class. Okay. And what are the different types of inheritances are there? Single level. What is single level inheritance? One class extends another class, or one interface extends another interface. What is multi-level inheritance? One class extends another class, that class is extended by some other class. Okay. What is cyclic inheritance? One class is trying to extend itself. That is not possible in Java. You get compile time error. What is a multiple inheritance? What is multiple inheritance? हो गया, क्या है? One class, one class is trying to extend more than one classes. That is multiple inheritance. Is it supported in Java? It is not supported through classes, but it is supported through interfaces. Perfect. It is not supported through classes, but it is supported through interfaces. Why it is not supported through classes? Now, if one class is trying to extend more than one classes, so if both the parent classes have the same set of variable and same set of method, what will happen? Child class will have the confusion which method to access or which variable to access. So it is not supported through classes. How it is supported through interfaces? How it is supported through interfaces? इंटरफेस के थ्रू कैसे सपोर्ट किया जाता है इसके? इंटरफेस के थ्रू कैसे सपोर्ट किया जाता है? यूजिंग इम्प्लीमेंट्स की। हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इंटरफेस कैसे सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस? फाइनली, perfect. For the child class, there is no confusion. Why? Because child class interface does not have instance members. इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता, इंस्टेंस मेथड नहीं होता, इंस्टेंस ब्लॉक नहीं होता, कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ब्लॉक्स नहीं, इनर क्लासेस नहीं इसके अंदर, तो चाइल्ड क्लास के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? नाउ whether one class extends another class or implements, so one class extends another class, right? And one interface extends another interface. One class extends another interface. True, false? One class extends another interface. False statement, right? So one class extends another class. One interface extends another interface. One class extends another class, and one interface extends another interface. One class implements another interface. ये तीन cases याद रखना. One class extends another class. One interface extends another interface. One class implements another. One class implements another interface. Okay. And what is method overriding? What is method overriding? Yes. What is method overriding? We create a method in the subclass with the same name. We write a method in the subclass with the same name, same signature, same reader type as our parent class method. That is called as method overriding. So why do we do method overriding? What is the reason we are doing method overriding? Code reusability.
कोड रिविजिबिलिटी हाउ डू वी अचीव यूजिंग इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का यूज करके क्लास, जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर जो भी नॉन प्राइवेट नॉन स्टैटिक डेटा है या मेंबर मेथड्स है वो किसके पास आ सकते हैं, चाइल्ड के पास। तो मेथड ऑलरेडी है ना वहाँ पर, तो फिर से आप क्यों लिख रहे हो आपके क्लास में। है क्या? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अगर आप उस मेथड को, आपके पास ऑलरेडी मेथड है आपके पास हो, तो वाई वी आर अगेन राइटिंग दैट मेथड इन द चाइल्ड क्लास। मतलब आपको वो कोड अननेसेसरी है, कुछ 10 मेथड है आपके पास एज इट इज है, लेकिन उसमें से कुछ मेथड है आपको नहीं चाहिए, that is unnecessary coming to you. You want something different than the method which is there from the parent class. If you are not happy with the parent class method, that's the reason we override that method. Also, if you want to extend some more feature, पहले तो वो तो चाहिए आपको, प्लस एक्स्ट्रा कुछ चाहिए और, तो आप मेथड ओवरराइड करते हैं, राइट, to actually override the logic, or if you want to extend the, if you want to extend the functionality, the reason we do method override. Now, whenever one concrete class extends another class, what happens? Is it compulsory to override methods? No. Whenever one concrete class extends another abstract class, is it compulsory to override abstract methods? One concrete class tries to extend another abstract class. Is it compulsory to override methods? Yes. One abstract class tries to extend another abstract class. Is it compulsory to override methods? When concrete class implements an interface, is it compulsory to override abstract methods from the interface? क्वेश्चन फिर से एक बार बोलो, हाँ, नहीं करना। One concrete class tries to implement an interface, then is it compulsory for the child class to override abstract methods from the given interface? एक क्लास है that is implementing an interface, ठीक है, एक चाइल्ड क्लास है that is implementing an interface, और इंटरफेस के अंदर कुछ concrete कुछ मेथड्स है, abstract मेथड, उसको कंपलसरी ओवरराइड करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? abstract मेथड उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। कॉन्क्रीट क्लास में कौन सी मेथड होती है? कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को, तो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी वो उसके पास आएगी, चाइल्ड क्लास के पास, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी फॉर द चाइल्ड कॉन्क्रीट क्लास टू प्रोवाइड implementation for the concrete that abstract method. When one abstract class implements an interface, is it compulsory to override methods? It is not compulsory, it is optional. Clear? Okay. Then what is functional interface? Rika? What is functional interface? Functional interface. Interface which contains single abstract method. Interface which contains single abstract method. ऐसे interface को बोला जाता है single abstract method. SAM बोल सकते हो। चलो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। So collection framework provides lot of predefined classes and interfaces which are present inside the java.util package. Or one last question, what is hierarchical inheritance? What is hierarchical inheritance? One class is subclassed by more. One class is subclassed by more than one class. ठीक है। ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये आपका हायरार्की। कौन सा मल्टीपल है इसमें? ये वाला, ये आपका हायरार्की इनहेरिटेंस।
Clear है? Okay. Now pay attention carefully. Let's I'm writing couple of classes interfaces there. Now I have this interface called as iterable. So what is iterable? It is an interface. Now iterable uh, is is extended or implemented by. Iterable is extended by collection, और ऐसे बोल सकते हो collection extends iterable. Iterable और collection दोनों क्या है? Interfaces. ध्यान देना. Then collection interface is extended by list, set, all of these are, जो दिखाई दे रहा है आपको सारे क्या है? Interfaces. Now list interface is extended by implemented by array list, the concrete class. Okay, concrete class. Then we have linked list. It is also concrete class. Yeah, vector is also vector is extended by क्या है आपका? Now set is implemented by asset. It is a concrete class. It is extended by linked asset. It is also concrete class. Now set is again extended by sorted set. It is an interface. It is extended by navigable set. It is also interface. Now wait. इसको here iterable collection set list asset set. ठीक, और देखो iterable is extended by collection
ठीक है, तो यहाँ पर इटरेबल, we'll just draw this once again. See this once again, just have a clarity on this. यहाँ पर सबसे पहले आपको है इटरेबल, क्या है? इटरेबल इज एन इंटरफेस, क्या है? इंटरफेस, ध्यान देना। नाउ इट इज एक्सटेंडेड बाय collection. Collection is also an interface. यहाँ तक ठीक है? सा layer है. Then we have again three different things. इसलिए इसे hierarchy बोला जाता है. So we have list is interface, set is also interface, queue is also interface. यहाँ तक ठीक है? Iterable is extended by collection. Collection is extended by list, set and hash. यहाँ तक clear है? 1 2 again 3. Iterable का सब क्लास कलेक्शन, कलेक्शन का सब क्लास लिस्ट, सेट एंड क्यू. अब यहाँ पर फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं. तो लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय array list, it is a concrete class. Linked list is also concrete class. Vector is also concrete class, and vector is extended by ये सारे आपके ग्रीन वाले हम जस्ट आर concrete class. These are classes. वैसे हम सेट की तरफ जाते हैं. तो सेट इज ऑल्सो, सेट इज implemented by has set is a concrete class, and has set is extended by linked has set, it is also, then set is also extended by sorted set, the interface. Sorted set is extended by tree set, navigable set, it is a interface. It is implemented by tree set. The concrete classes देखो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया, ग्रीन बॉक्सेस आर concrete classes. जो आपके रेड में है, these are your finally queue is implemented by priority queue, concrete class, and it is also implemented by also, so both of these are दिल दिमाग में छाप लो इसको. So iterable is extended by collection, collection is extended by list, set and queue. Then list is implemented by array list, linked list, vector, stack. Then set is
implemented by hash set. Hash set is extended by linked hash set. Set is extended by sorted set, navigable set, and it is implemented by tree set. और यहाँ पर देखो array list, linked list, vector, stack, hash set, linked hash set, tree set, and priority queue. What are these? These are concrete classes. These are concrete classes. These are concrete. ये एक हायरार्की है और आप यहाँ पर सेट का देखो, इफ यू केयरफुली सी सेट, यहाँ पर if you carefully see set is implemented by hash set. Hash set is extended by linked hash set. Set is extended by sorted set. Sorted set is extended by navigable set, and navigable set is implemented by tree set. So exactly same hierarchy we have. One more, there is a hierarchy. What is that? Just map. So this map is an interface which is implemented by hash map. It is a class. Hash map is extended by linked hash map. It is extend map is extended by sorted map is also sorted map is extended by navigable is also interface, and navigable map is extended by map is an interface, sorted map is also interface, navigable map is also, and then we have hash map. It is a class. Hash map, it is also concrete class. Tree map is also simple. This is also one hierarchy. ये भी आपको याद रखना है. Idea. Now, just to have this idea, यहाँ पर देखो इटरेबल के अंदर जो भी मेथड्स होगी, what are the methods are there in the iterable will be part of collection. Yes, as part of inheritance. Whatever the methods are there of collection will be part of list, set, and queue. Will be part of list, set, and queue. Now, list methods will be part of array list, linked list, vector, and stack. Set methods will be also part of hash set, linked hash set also. Tree set. Now think of tree set. Think of tree set. So what things tree set will have? So tree set will have all the methods from iterable, collection, set, sorted set, navigable set in the tree set, plus उसके कुछ extra. क्या क्या होगा tree set में? Everything from the iterable, everything from the collection, everything from the set, everything from the sorted set, everything from the navigable set. Or at the 6th level, tree set has tremendous functionalities available.
तो बेचारे को आप देखो कितने सारी मेथड्स ओवरराइड करते होंगे. तो tree set is going to implement all the methods from iterable, collection, set, sorted set, navigable set. So he has to override all the abstract methods which are there, iterable, collection, set, sorted set, and इतनी सारी मेथड्स कहाँ पर होगी. सिमिलरली एरे लिस्ट को कौन कौन सी मेथड्स ओवरराइड करनी पड़ेगी. एवरीथिंग फ्रॉम द इटरेबल, एवरीथिंग फ्रॉम द कलेक्शन, एवरीथिंग फ्रॉम द लिस्ट. इटरेबल, कलेक्शन, लिस्ट, इसकी सारी मेथड्स कहाँ पर प्रेजेंट होगी आपको. एरे लिस्ट में भी होगी, लिंक लिस्ट में भी, वेक्टर, स्टैक. क्यू, ही विल हैव ऑल द मेथड्स फ्रॉम इटरेबल, कलेक्शन, क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू. ठीक. अब मुझे बताओ कलेक्शन में कुछ जो मेथड्स लिखी है. देयर आर सम कपल ऑफ मेथड्स. वी विल टॉक अबाउट द टॉप डाउन अप्रोच. वी विल गो. Iterable has one method. We'll be discussing this thing also mostly next class. तो आप मुझे बताओ कलेक्शन की मेथड कौन कौन से क्लासेस में. कलेक्शन इंटरफेस की मेथड्स कौन कौन से क्लासेस में. सारे क्लासेस में. जो भी कॉन्क्रीट क्लास है, जो भी कॉन्क्रीट क्लासेस है इस हायरार्की की, सबके पास कलेक्शन की मेथड्स ओवरराइड करी होगी उन्होंने. यस. नाउ सब में सेम कोड होगा या अलग अलग होगा. मेथड का सिग्नेचर तो सेम होगा लेकिन उसके अंदर जो लॉजिक लिखा होगा दैट विल बी डिफरेंट. क्यों क्यों डिफरेंट होगा. क्योंकि ये इतने सारे क्लासेस बनाए मतलब उन्होंने क्या क्रिएट किया. नाम से थोड़ा पता चलना चाहिए आपको. इतने सारे क्लासेस मतलब उन्होंने इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स दिए. क्या दिए. डेटा स्ट्रक्चर. तो आपका उनका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा. सबका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा. और मेथड का नाम तो सेम होगा. सब में डेटा ऐड ही करना है लेकिन the way we add the data it is going to be different. all of the collections, कंटेनर अलग अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, उनके ऊपर ऑपरेशन करने का तरीका सब में अलग अलग होगा. भले ही मेथड का नाम सेम हो, इन उसके अंदर जो लॉजिक होगा वो सब अलग अलग होने. हाउ डिफरेंट. राइट. तो यहाँ पर आपको तीन लेयर दिखाई दे रहे होंगे. लिस्ट, सेट एंड क्यू. लिस्ट, सेट एंड क्यू. तो कलेक्शन का यूज क्या होता है. कलेक्शन का यूज होता है टू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एज अ सिंगल यूनिट. क्या यूज होता है कलेक्शन का. टू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एज अ सिंगल यूनिट. नाउ समटाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट यू वांट टू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज विच कैन बी डुप्लीकेट ऑल्सो. डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज. तब आप जाते हो लिस्ट के पास. अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज रखनी है लेकिन यूनिक वैल्यू चाहिए देन यू गो विद द सेट. तो लिस्ट का कब यूज करोगे. डुप्लीकेट डेटा के लिए. कब. डुप्लीकेट. सेट. और क्यू का यूज करके आप जैसे क्यू देखे होंगे, जैसे मूवी थिएटर जाते हो आप टिकट लेने के लिए, एक क्यू में रुकते हो. दैट इज नथिंग बट अ क्यू. दैट इज नथिंग बट अ कंटेनर. हाउ डू पीपल एंटर इनटू दैट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट फर्स्ट आए उसको टिकट मिलेगी ना, या जो लास्ट में आए उसको पहले टिकट मिलेगी. जो फर्स्ट आएगा उसको टिकट मिलेगी. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो क्यू फॉलोज दैट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर. मतलब आपको कुछ डेटा होल्ड करना है बिफोर दे आर प्रोसेस, तो आप करते हो क्यू का यूज. यहाँ पर डुप्लीकेट भी हो सकता है. डुप्लीकेट, यूनिक एंड. अभी आपको क्या करना है. यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. मल्टीपल वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है तो कहाँ पर जाना है. लिस्ट के पास. अगर यूनिक डेटा स्टोर करना है तो किसके पास जाना है. सेट के पास. आपको कुछ प्री प्रोसेसिंग ऑर्डर रखना है तो कहाँ पर जाओगे. क्यू के पास. तो तीन आपकी क्लियर कट रिक्वायरमेंट्स है. डुप्लीकेट, यूनिक एंड प्री प्रोसेसिंग ऑर्डर. डुप्लीकेट डेटा स्टोर करना तो आप लिस्ट के पास जाओगे. यूनिक डेटा स्टोर करना है तो सेट के पास. तो उन्होंने इतने सारे क्लासेस इसीलिए दिए कि वी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स वी हैव डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट algorithm, different classes for different requirements. Getting this idea. तो आज का आपका काम यही है. गो थ्रू दिस हायरार्की n नंबर ऑफ टाइम्स, 10 20 टाइम्स. जब तक करेक्ट नहीं आता तब तक उसको आप टाइम दे दो. जब तक आप
बिना देखे उसको बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, तब तक कंटिन्यू कर पाओ उसको, राइट। प्रिपेयर दिस पूरा वीक, हफ्ता पूरा इसमें जाने दो, नो प्रॉब्लम। ट्राई टू स्पेंड एज मच एज टाइम पॉसिबल ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जितना एक हफ्ता देना है दैट्स परफेक्टली फाइन, पूरा वीकेंड देना है इसके ऊपर दे सकते हो, लेकिन इट इज वन ऑफ द चैलेंजिंग टॉपिक, इसके ऊपर जितना मेहनत कर सकते हो करो। इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा, आपकी काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसका यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले, तो फोकस ऑन दिस। तो आज के लिए बस इतना ही। बिफोर दैट आई विल जस्ट क्विकली से व्हाट इज थिंग्स वी हैव सीन। फ्रेमवर्क का मतलब होता है प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कोड, और फ्रेमवर्क कैन बी रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जावा फ्रेमवर्क्स आर कलेक्शन, हाइबरनेट, स्प्रिंग, जहाँ पर मिलेगा आपको प्रीडिफाइंड क्लासेस, इंटरफेसेस, एंड फ्रेमवर्क्स आर यूजुअली सॉल्यूशंस provided for some set of problems. Frameworks can be free as well as they can be paid. Using frameworks, we can speed up the application development process. Frameworks are nothing but semi-developed applications. To store multiple values, we can create multiple variables, but that is not that feasible and it is not that efficient also. And we can hold multiple values using array, but array के साथ बहुत सारी difficulties है. Using array, we can store only fixed number of values. We can store homogeneous data only, and there will be either shortage or wastage of memory space. And array is the worst choice if you are performing multiple insertion, deletion elements, as there will be a lot of shifting of elements. Performance wise, it is not the best. And there is no method support such as searching, sorting, insert, delete. For every requirement, developer is supposed to write the code. So considering all of these requirements, collection framework was provided. So that what is collection framework? Collection framework, it is Java-based framework which contains predefined set of classes, interfaces, methods. And this is something we do not need to get it externally. It is part of JDK only. And using collection, what we can do, we can hold multiple values which can be of same type or different type as a single unit. Advantage of collection framework, we can hold multiple values which can be growable in nature. There is no shortage. We can hold homogeneous as well as heterogeneous. Collection provides a lot of predefined methods which can be used to perform different operations with a group of values such as add karna, remove karna, update karna, sort karna, search karna. And it collection framework in conclusion provides a lot of predefined data structures and algorithms. Data structures are provided through classes and interfaces. Algorithms are provided through methods. Data structure is nothing but a structure or a container using which you can store the data. On a given container or structure, we can perform different operations using algorithms such as these operations, and there are different types of structures for different requirements. Array, linked list, stack, queue, tree, these are some of the examples. उसके बाद हमने देखा था collection framework hierarchy. So collection framework hierarchy, there are a lot of classes which are present inside this particular and all of these classes present inside the java.util package. One last glance on this particular hierarchy. Iterable is the interface which is provided by, which is extended by collection. Collection is extended by list, set, and queue. List is implemented by 4 classes: array list, linked list, vector, and vector is extended by stack. Set is implemented by hash set. Hash set is extended by linked hash set. Then set is extended by sorted set. Sorted set is extended by navigable set, and navigable set is extended by, it is implemented by tree set. And queue is implemented by priority queue and linked list. और उसके बाद मैप देखा था. मैप is interface which is implemented by hash map, and hash map is extended by linked hash map. Map is extended by sorted map. Sorted map is extended by linked navigable map, and navigable map is implemented by tree map. This is the two structures. Just go through this and you will be sorted.